One TV News with me, Esma. Let's start with some national news. In an alarming incident early Tuesday, actor and Shiv Sena leader Govinda accidentally shot himself in the leg at his Mumbai home. The incident occurred around 5 a.m. shortly before he was due to leave for a flight to Kolkata for a performance. At the time, only his servant was at present. His manager Sashi Sinha reported that the revolver misfired after falling from a cupboard. Govinda was rushed to Criticare Hospital in Andheri, where he is being treated for a leg injury that is not life-threatening. Mumbai police have taken possession of the firearm and are investigating the circumstances surrounding the accident. Thankfully, Sinha noted that it was a relief the injury wasn't more serious. Legendary actor Rajnikant was rushed to Apollo Hospital in Chennai late Monday night due to severe stomach pain. Hospital sources reported that the 73-year-old star is now stable and is expected to undergo an elective procedure today. As of now, there has been no official update from his family or the hospital. This is not the first health scare for Rajnikant. In 2020, he was hospitalized for high blood pressure shortly before announcing his political ambitions. After a brief recovery, he decided not to enter politics, citing health concerns as a warning from God. His political entry generated considerable excitement among supporters, leading to the formation of the Rajni Makkal Mandram. However, he later dissolved the organization due to ongoing health issues. Fans and well-wishers are eagerly awaiting updates on his condition. Prime Minister Narendra Modi spoke with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on September 30th, focusing on the escalating conflict in West Asia involving Hezbollah. Modi stressed that terrorism has no place in our world and reaffirmed India's commitment to restoring peace and stability in the region. He underscored the need to prevent further escalation and ensure the safe release of the hostages. The conflict has intensified following Hamas's attacks in Gaza, leading to Israel's military response against both Hamas and Hezbollah. Hezbollah has launched over 8,000 rockets into northern Israel, while Israel has retaliated with airstrikes and artillery fire targeting Hezbollah positions in Lebanon. The situation poses a significant threat to peace in the Middle East, raising concerns for regional stability. In response to the tragic rape and murder of the young doctor at Arjikor Medical College and Hospital, junior doctors in West Bengal have resumed protest, demanding immediate action from the state government and the Central Bureau of Investigation or CBI. Frustrated by slow investigative processes and unfulfilled safety promises, they seek justice for the victim Abhaya and improvements in healthcare infrastructure. The West Bengal Junior Doctors Front criticized CBI's progress and the Supreme Court's handling of the case, calling for specific reforms including the removal of the Health Secretary, increased political protection and better hospital safety measures. Following a previous 42-day strike that ended in September, they resumed protest due to lack of progress. The Supreme Court has intervened, urging the CBI to expedite its investigation while the Kolkata High Court allowed peaceful protest. The junior doctors emphasized their demand for substantive reforms rather than mere promises, highlighting the need for both justice and enhanced safety in medical institutions. लेकर बैठे थे 2 बजे से स्टेज पर हमारे धरना मंच पर हम बैठे थे कि हम देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट जैसे 27 सितंबर से 30 सितंबर हो गई, डेट डिले हो गई. अभी ये डेट 30 सितंबर से 14 अक्टूबर हो गई है, 14 दिन डिले हो गई फिर से नेक्स्ट हियरिंग के लिए. और आज जो टाइम था 2 बजे का टाइम दिया गया था, जब 5 बजे जाकर सुनवाई शुरू हुई तो वहां पे ही हम कहीं ना कहीं एक आशा खोने लगे थे कि क्या हो रहा है, आज क्या हियरिंग होगी, आज क्या सुनवाई होगी. हम सब बैठे हुए थे, सब वेट कर रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि आज की हियरिंग भी क्या कैंसिल हो जाएगी, क्या चल रहा है अंदर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और इस मोमेंट हम बस सीजीआई, ऑनरेबल सीजीआई पे ये आशा के साथ हम आज अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हमें जस्टिस मिलेगा, हमें अभया का न्याय और इंसाफ मिलेगा. लेकिन न्याय इंसाफ से रिलेटेड कोई डिस्कशन कुछ खास हुई नहीं. बट जो नेशनल टास्क फोर्स की आप बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया था. वहां पे हम ये देख पाए कि 21%, 26% ऐसे डेटा आ रहे हैं, मतलब 50% काम नहीं हुआ है कहीं पे भी. और जब तक ये काम नहीं हो रहा है तब तक हम लोग सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है और हम ड्यूटी कंप्लीटली नहीं रिज्यूम कर पा रहे हैं. और अब
जब हमने देखा कि सागर दत्ता में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, नेशनल मेडिकल में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, तो कोई गारंटी नहीं है कि कल आरजीकर में हम ड्यूटी फुल फ्लेजेड ज्वाइन कर लेंगे, या जो हम ड्यूटी अभी कर रहे हैं वो उस दौरान भी ऐसा कुछ हो जाएगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व कौन लेगा? नोबडी इज आंसरेबल। एंड स्टेट गवर्नमेंट हर हियरिंग में वी वॉन्ट सम टाइम, ये टाइम ले लेकर बस हियरिंग ही डिले हो रही है, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑनरेबल सीजीआई ने बोला कि व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन, क्या काम हुआ है हमें बताओ, कितने सीसीटीवी लगे हमें बताओ। तो जब उनके आंसर सुन रहे हैं, दे आर नॉट, मतलब एकदम भी कुछ खास काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ना के बराबर हुआ है। और जो भी हमारी मांगे है, वो उनमें से कुछ भी मांगे जो वहां से रिलेटेड है वो पूरी नहीं हुई है, और न्याय तो हमें मिला ही नहीं है। तो न्याय जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी। हमने देखा कि कुछ लीड्स ऐसे बंद एनवलप में कुछ 5 या 7 नाम ऐसे हैंडओवर कर दिए गए हैं, कुछ लोगों के अगेंस्ट ऐसा उनका सस्पिशन मिल रहा है, उन्हें लीड्स मिल रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लीड्स तो उन्हें पहले दिन से मिल रहे हैं, जब से सीबीआई आई है इस कैंपस में, आरजी कॉर में, तब से उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है। बट एक्शन क्या है? एक्शन कुछ करना पड़ेगा, अरेस्ट कुछ करना पड़ेगा, कुछ जो पनिशमेंट है वो अनाउंस करना पड़ेगा, तब हमें लगेगा कि हाँ इस देश में न्याय है, हाँ हमें न्याय मिलेगा, और लोगों को यकीन होगा कि हाँ न्याय हो रहा है, इंसाफ मिल रहा है, कुछ हो रहा है। तो बस लीड्स है, कुछ एनवलप्स में इधर उधर हो रहे हैं, हमें इतना समझ नहीं आता। Chintu Verma, the BJP's indoor president, sparked controversy by suggesting that attendees at Garba events should sip Gomutra or cow urine before entering, raising concerns about religious inclusivity and politicization of cultural festivities as assembly elections approach. His remarks imply that only Hindus should participate in Garba, echoing past incidents when non-Hindus faced scrutiny at such events. The Congress party condemned this as a tactic to polarize communities, criticizing the BJP for focusing on cow-related politics instead of pressing issues. This incident follows previous scrutiny of non-Hindu attendees at Garba events, highlighting tensions around religious identity in public celebrations. Verma's comments reflect a broader trend of reinforcing Hindu identity in cultural spaces, emphasizing the complex interplay of culture and politics in India. माता की आराधना का है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियां करती हैं, और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएं आती हैं कि कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है, और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं, तो गौ माता हमारी जो माता है, गोमूत्र हम लोग पीते हैं, प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गोमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है, टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है। तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व, और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गोमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। और आधार कार्ड को भी लेकर आपकी भी देखिए, आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना, सब संभव है, पेपर है, एडिटिंग हो सकती है, लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। भाई हिंदू है तो पिएगा, बिल्कुल पिएगा, नहीं पीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। Prime Minister Narendra Modi recently spoke with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and escalating tensions in the Middle East, particularly following intensified Israeli military actions against Hezbollah. Modi emphasized the need for further prevent regional escalation and ensure to safe release of the hostages held by Hamas since the October 7 attack. India's stance includes calling for an immediate ceasefire, resumption of humanitarian aid in Gaza, and a return to diplomatic negotiations for two-state solutions. Meanwhile, Netanyahu warned of Iran's influence in the region, asserting Israel's commitment to protecting its citizens. This conversation reflects the complexities of both international relations as both leaders navigate their respective national interests amid ongoing conflict. Dr. Zakir Naik, a prominent religious preacher, has arrived in Pakistan for a month-long visit, marking his first trip to the country in 30 years. His last visit was in 1992 when he met with the renowned religious scholar Dr. Israr Ahmed in Lahore.
Upon arrival at Islamabad International Airport, Naik was warmly welcomed by officials from the Ministry of Religious Affairs and the PM's aide, Rana Mashood. He is scheduled to deliver lectures across major cities beginning in Karachi on October 5th, followed by Lahore on October 12th and Islamabad on October 19th. During his stay, which will last until October 28, he will engage in public gatherings, meet with senior government officials and participate in various community events. The visit, organized at the government's invitation, includes arrangements for secure accommodations throughout this time in Pakistan. And finally, it's time for sports news. Cricket South Africa has announced a 15-man squad for the upcoming two-test tour of Bangladesh led by Temba Bavaba. South Africa aims to improve their historical performance in Bangladesh, having struggled in previously visits. Notably, the squad features a three-pronged spin attack, including the return of Senurathan Muthuswamy, who hasn't played in a year. Muthuswamy joins Keshav Maharaj, and both retained from the West Indies tour. Coach Shukri Conrad acknowledged the challenges of touring Bangladesh, emphasizing the strength of the home side and the importance of being prepared. Lungi Nigri is the only player missing from the squad due to injury. This series may also mark a pivotal moment for Shakib Al Hassan. Potentially his last in Test cricket, through his participation remains uncertain. The Proteas took to capitalize on this opportunity to strengthen their position in the World Test Championship. That's all for today. Stay connected for more updates. Thank you.